Okay, so good morning to all of you, all those people who have joined online. I can see who is this Abhishek? Okay, Abhishek, just make sure that camera is on. That's all. Huh? Thank you. See, the software will delete you from the meeting if the camera is not switched on by you. Okay? Yeah, thank you. Yeah, so we are here to discuss Roman 4 today. And Roman 4 also involves bank. रोमन 2 में भी बैंक इन्वॉल्व है हाँ रोमन 4 में भी बैंक इन्वॉल्व है सो रोमन 4 इज व्हेन द बिल्स रिसीवेबल is sent to bank for collection. Obviously, by whom? By whom? ये रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4 ये सब ऑप्शंस जो है चार ये किसको अवेलेबल है ड्रॉर को फर्स्ट ही विल ऑब्वियसली ड्रॉ बिल ऑन ड्रॉई if there is debtor creditor relationship. After drawee accepts it, he gives it back to drawer. Then drawer has four options. Number one, he can retain the bill till the due date and he will himself go to the drawee and collect the money. Roman 2, if he is in need of money immediately, he will go to the bank and discount the bill. Roman 3, he will endorse the bill to the endorsee. बराबर है? I am the endorser. The one who endorses the bill is called endorser. And the person to whom the bill is endorsed is called endorsee. मतलब ड्रॉर एंडोर्सर हो गया और ड्रॉर का क्रेडिटर मतलब जिसको ड्रॉर लायबल टू पे है वो एंडोर्सी हो गया अब ये चौथा रोमन क्या है सी टुडे you expect that I will have only one debtor or I can have n number of debtors. I can have n number of debtors. मतलब I will have many customers, right? To whom I am selling goods on credit. So, is it that case that there will be only one time sale throughout the year to one customer? No. So, you will have a lot of customers and lot of time you will be selling continuously goods to them on credit. So, हर बार आपका बिल आएगा सो कैन आई से एज अ बिजनेसमैन यू विल हैव एन नंबर ऑफ बिल्स रिसीवेबल जिसका सबका ड्यू डेट अलग होगा और वो कंटिन्यूस प्रोसेस होगा ऐसा नहीं है कि एक महीने में ये 4 बिल है बस उसके बाद कुछ नहीं नो इट विल बी ऑन गोइंग प्रोसेस सो मिस्टर ड्रॉर विल हैव एन नंबर ऑफ बिल्स रिसीवेबल एंड इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू फॉरगेट द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स एंड अगर उसने बिल को डिस्काउंट नहीं किया होगा एंडोर्स नहीं किया होगा तो ऑन द लीगल ड्यू डेट ही विल हैव टू गो एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम ड्रॉई एंड ही मे नॉट बी अवेलेबल ही मे नॉट रिमेंबर एंड इन दैट केस पैसे मिलेंगे नहीं क्योंकि वेरी रेयरली ड्रॉई खुद आके चल के आके पैसा देगा सो व्हाट ही कैन डू इज ही कैन रिक्वेस्ट हिज बैंक I am giving this bills receivable to you. Instead of me going and collecting the money on the legal due date from drawee, please go and collect the money on the legal due date on my behalf. As a student, when I say this, you should have a doubt. Sir, why drawee will pay to bank? आपको फर्स्ट प्रॉब्लम में रोमन 1 में ही मैंने समझा दिया है ड्रॉई को कौन आता है उससे रुपये का फर्क पड़ता नहीं है ऑन द लीगल ड्यू डेट कोई भी आएगा ही विल ओनली आस्क फॉर वन थिंग गिव मी माय बिल्स पेएबल एंड ही विल पे द मनी सो ड्रॉई की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नाउ व्हाट बैंक विल डू बैंक विल गो एंड कलेक्ट द मनी बैंक विल कलेक्ट द मनी ऑन हुज बिहाफ ड्रॉर्स बिहाफ so bank will put the money in whose bank account drawers bank account and for this service
Bank will charge some nominal charges to whom? Drawer. It is as simple as this. So how do we go about it? Your first two entry, that is when goods are sold or purchased on credit basis, remains the same. So what entry Mr. Drawer will pass? Drawee's account debit to sales account. And what entry he will pass? Purchases account debit to drawer's account. With this, their debtor-creditor relationship started, right? Now, who will draw bill on whom? When the bill is drawn by drawer and accepted by drawee, signed by drawee with date of acceptance so this bill for drawer becomes bills receivable. And now किसके पास क्या ऑप्शन है? ड्रॉअर के पास ऑप्शन है कि he can send a bill to the bank for collection. Now please understand, he may send a bill to the bank for collection immediately, or he may send a bill to the bank for collection just few days before the legal due date. That is his choice, that is his convenience. सर, तो उसने इमीडिएटली भेजा और 3 महीने पहले, मतलब आज समझो ड्यू डेट है, 3 दिन के बाद लीगल ड्यू डेट है. आज ड्यू डेट है, 3 दिन के बाद लीगल ड्यू डेट है. तो मैं आज भेज सकता हूं? हाँ. मैं कल भेज सकता हूं? हाँ. मैं परसों भेज सकता हूं? हाँ. इन वर्स्ट केस कैन आई सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन इवन ऑन द लीगल ड्यू डेट? हाँ. ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों मतलब? यू आर एक्सपेक्टिंग योर बैंक टू कलेक्ट मनी ऑन योर बिहाफ, सो यू मे गिव द बिल्स रिसीवेबल 5 months बिफोर. 5 महीने का बिल पीरियड है, तो लीगल ड्यू डेट को लीगल ड्यू के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले कभी भी बेच सकते हो ना सर. तो फिर व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक? एक मिनट, काय का इंटरेस्ट? आर यू टेकिंग एनी मनी फ्रॉम बैंक? What is the difference between Roman 2 and Roman 4? And what is the similarity between Roman 2 and Roman 4? Can you tell me? Similarity is physically bills receivable will be with the bank. Roman 2 में भी बैंक जाएगी, Roman 4 में भी बैंक ही जाएगी, पक्का. This is the similarity. Now what is the difference between Roman 2 and Roman 4? In Roman 2, no, that we have already done. Now on the legal due date, what is the difference between Roman 2 and Roman 4? In Roman 2, bank will collect the money for themselves. And in case of Roman 4, bank will collect the money on behalf of drawer. Clear है कि नहीं? 100%? Yeah.
So when the bills receivable is sent to bank for collection, obviously he will not pass any entry. क्यों? उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है. And what entry this guy will pass? You're sending the bill to the bank for collection. So अभी पैसे मिले तुमको, तो फिर किस हिसाब से कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट? If you say bank account debit because you're sending the bill to the bank for collection and bank is the receiver, you're wrong. Because the moment you say bank account debit, आपके अकाउंट में पैसे आ गए. क्या आप पैसे ले रहे हो बैंक से? नहीं. You're just giving the bills receivable to the bank for collection. So 110% ड्रॉअर के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा because this bills receivable is no more with you. हाँ या ना? तो अकाउंट भी कैंसिल होना चाहिए. सो उसके सामने डेबिट किसको करोगे? बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट. इसको कोई कोई बैंक से बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट भी बोलते हैं. बिल्स फॉर कलेक्शन और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. दोनों का मतलब एक ही है ना? क्या मतलब है? From this account, what we come to know is amount is receivable from bank because we have sent the bill to the bank for collection. अगर यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट लिख दिया, thinking that bank is the receiver, what is the meaning of that? Your bank balance has gone up. That means you took loan from the bank. Are you taking loan from the bank against bills receivable? No. You're just asking your bank to collect the money on your behalf. कुछ तो समझो ना कि सब कुछ समझ गए. रोमन, आई मीन इंग्लिश 4. क्या? When on the legal due date, ड्रॉई बोलो. Do you say I will not pass any entry? What entry will pass? Think and tell me. Bank collects the money on your behalf, right? So where bank will put that money? So which account you will debit? Absolutely. और अभी आपको पैसे मिल गए, तो वो जो बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट या बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, जिससे ये पता चलने वाला था कि हमने बैंक को बिल दिया है तो बैंक पैसे कलेक्ट करेगी लीगल ड्यू डेट को, इसीलिए बैंक से पैसे रिसीवेबल है, वो रिसीव्ड हुए. तो अभी क्या करना पड़ेगा? समझे या नहीं समझे? एंड व्हाट एंट्री दिस गाय विल पास? उसका तो फिक्स है. He cancels his liability, so bills payable account debit to cash or bank account. अब ये जो फैसिलिटी बैंक ने प्रोवाइड की है, इसके लिए बैंक आपको अमाउंट, आई विल से कलेक्शन चार्जेस या बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक. क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बोलो, टू बैंक अकाउंट.
in today's world, bank will not charge you for individual facility. In today's world, there is no bill of exchange operations going on. Nobody operates. So यहाँ आज की तारीख में बैंक चार्जिंग यू कलेक्शन चार्जेस फॉर कलेक्टिंग द मनी, वो तो होने वाला नहीं है. माई पॉइंट इज, बैंक आज आपको सिर्फ ये सर्विस नहीं प्रोवाइड करती है. बैंक आपके बिल्स पे करती है, बैंक आपका पैसा रिसीव करती है, बैंक आपको कई सारी लॉकर फैसिलिटीज देती है, बैंक आपको कई सारी फैसिलिटीज देती है, अलग अलग टाइप ऑफ अकाउंट की, रिकरिंग डिपॉजिटेड. सो बैंक ऑफर्स यू वेरियस सर्विसेज. अब क्या है ना, बैंक विल चार्ज यू ऑन क्वार्टरली बेसिस, 6 मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस. सो ऐसा इंडिविजुअल सर्विस का चार्ज वाला जमाना गया. सम सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय बैंक फ्री. अब फ्री का कोई मतलब नहीं होता है. नाउ शेष एडुकेयर एज अ करंट अकाउंट, सो वी हैव द शेष एडुकेयर कलेक्शन गोज इन दैट पर्टिकुलर करंट अकाउंट. सो बैंक ऑफर्स अस checks without paying. So we don't have to pay for the checkbook. Otherwise, you have to pay for the checkbook also. So like that, there are a lot of services which are offered by the bank. Again, मैं समझो, if I wish to make a payment of 25 lakhs rupees, then otherwise I have to ask the bank कि 25 lakhs rupees का चेक मैं दे सकता हूँ कि नहीं. I can make the payment. There are various facilities that bank gives. So please understand, you have to be very clear in your mind. What? Collection charges. एग्जाम में अलग से दे दिए, विल पास द एंट्री. बैंक चार्जेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट. रियल लाइफ में ये नहीं होने वाला. बट एग्जामिनर में गिव यू. अच्छा, इफ इट डज नॉट गिव यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कलेक्शन चार्जेस, क्या बैंक कलेक्शन चार्जेस चार्ज नहीं करेगी? करेगी, लेकिन अभी नहीं चार्ज किया. अभी नहीं चार्ज किया तो मैं अभी एंट्री नहीं पास करूंगा. क्लियर है? ये कभी आएगा, कभी नहीं आएगा. आएगा तो रिकॉर्ड करने का, नहीं आएगा तो तेल लगाने का. और इधर तो यार, पेंसिल तुम तब तक ये कॉपी करो. Read question number 4. एक मिनट. Tina received bill. Accepted by whom? So who is the drawee? Accepted by whom? So who is the drawee? And who is the drawer? Well, Turner's account will have a debit balance of, and Tina's account will have a credit balance of 10,000. ठीक है? What entry you will pass? कितना अमाउंट है? And what's the date? Narration. 1st July. For the bill due from him or for the amount due from him? Being the bills receivable received, accepted by Turner, for
Hmm. Being the bill drawn by Tina, accepted by us for the balance due to her, recorded. ठीक है? Now who has the bills receivable? Tina. What options Tina has? 1. She can retain the bill till the due date, Roman 1. Roman 2, she can discount the bill with the bank. Roman 3, she can endorse the bill to the endorsee. No, sir. She is the sir. And of course, Roman 4 is she can send the bill to the bank for collection. Yes. Yes, Akash, what is the problem? 1 minute. I am discussing Roman 1 है कि Roman 2 है कि Roman 3 है कि Roman 4 है. मैंने नहीं बोला Roman 2 है. हाँ. We are discussing. We are discussing what options drawer will have. Drawer will have 4 options. Number 1, drawer can retain the bill till the due date. Number 2, drawer can discount the bill with the bank. Number 3, drawer can endorse the bill to the endorsee. Number 4, he can send the bill to the bank for collection. Now what she has done? Bills for collection account debit. What is the legal due date of this bill? 4/8. So 4/8 के पहले कभी भी टीना भेज सकती है बिल. नरेशन क्या लिखोगे? Being the bill receivable received by Turner क्या? Accepted by Turner ना? तो being the bills receivable received accepted by Turner sent to the bank for recorded. ठीक है? What is the legal due date of this bill? So 4 अगस्त को क्या हुआ? नहीं, रीड करो बराबर से. Yes, 5th अगस्त को बैंक ने इन्फॉर्म किया. बट व्हाट इज द लीगल ड्यू डेट? So amount will be paid by drawee, that is Turner, on which date? Which bank informed whom? Bank informed drawee. Bank will collect the money from whom? So why bank will inform drawee? Bank will collect money on whose behalf? So bank will inform whom? That happened on what is the legal due date? Pakka. So I will honor the bill on
accepted by us for then तुमको मालूम है कि टीना को तो टाइम ही नहीं है, टीना को मालूम भी नहीं है एग्जैक्ट लीगल ड्यू डेट क्या है, ऐसा भी अज्यूम करते क्योंकि शी सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो उसको कब पता चलेगा कि बैंक ने पैसे कलेक्ट किए? वो इसको इन्फॉर्म करेगी। दैट्स व्हाई वी आर पासिंग द एंट्री इन द बुक्स ऑफ टीना नॉट ऑन 4/8 बट ऑन 5/8। तुम समझी नहीं समझी? बैंक ने पैसे कब कलेक्ट किए, विच इज लीगल ड्यू डेट, बट बैंक इन्फॉर्म टीना ऑन, so Tina's accountant will get the information from Tina on August. I don't know, you are confused or clear? Mr. Akash, what is the legal due date? 4th of August. So Turner has paid the money on 4th of August. Bank has collected the money also on 4th of August on behalf of Tina. But bank informed Tina on which date? 5th August. That is why Tina got to know that she has got the money on which date? 5th August. That's why she is passing the entry on 5th of August. नरेश, being क्या बोलो? being the accepted by इंटीमेशन फ्रॉम बैंक, मतलब हमको इन्फॉर्म किया गया बैंक से ऑन हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये बिल लीगल ड्यू डेट कोई ऑनर हुआ तो लीगल ड्यू डेट तो 4th अगस्त है, तो हम क्यों एंट्री पास करें 5th अगस्त को? क्यों? बिकॉज हमको इन्फॉर्म किया बैंक ने 5th अगस्त को। अदरवाइज व्हाट कैन बी मिसअंडरस्टूड इज 4th अगस्त वाज इमरजेंसीली डिक्लेयर्ड हॉलीडे, सो 5th अगस्त को पैसा कलेक्ट किया गया। ना ना ना, पैसा कलेक्ट किया गया है लीगल ड्यू डेट को ही, बट समझे नहीं समझे? होमवर्क के में जाओ एंड रीड द फुल प्रॉब्लम। बी केयरफुल, ऐश्वर्या रिसीव्ड द बिल लिखा है बट एक्सेप्टेड बाय whom? सो ऐश्वर्या इज द ड्रॉअर, सुष्मिता इज द ड्रॉई। नेक्स्ट, so what entry
Aishwarya will pass bills receivable account debit 15,000 to Sushmita's account 15,000. What entry? Sushmita will pass Aishwarya's account debit 15,000 to bills payable account 15,000. The bills receivable is with Aishwarya. She has got 4 options. Number 1, she can retain the bill till the due date. Roman 2, she can discount the bill with the bank. Roman 3, she can endorse the bill to the endorsee. वापस तुम सर बोला. Drawer, endorser. Drawer's creditor is endorsee. So, Roman 3, she can send the bill to the, Roman 3, she can endorse the bill to the, who is endorsee? Drawer's creditor. And Roman 4, she can send the bill to the bank for collection. So, ऐश्वर्या के पास बिल्स रिसीवेबल है और ऐश्वर्या के पास ये 4 ऑप्शंस है. अभी रीड करो आगे. एक मिनट. The bill was drawn and accepted on which date? 1st Jan. And it was for 1 month. So 1st Feb plus 3 days of grace. यानी 4th of Feb is the legal due date. तो कभी ऐश्वर्या ने बिल के साथ कुछ किया 31st of, which is before the legal due date. Okay. क्या किया उसने? So on 31st of Jan, she sent the bill to the bank for collection. We will pass the entry bills for collection account debit. What is the bill amount? 15,000 to bills receivable account 15,000. So it will be bank's responsibility to collect the money on behalf of Aishwarya from Sushmita. On which date? 4th of Feb. Read. 1 minute. If bank is informing Aishwarya that the bill has been honored on the legal due date on 5th of Feb, in the books of Aishwarya, you will pass the entry on which date? नहीं सोच रही हो आज? क्या मालूम नहीं? Bank inform Aishwarya on 5th of Feb that the money has been collected by them on 4th Feb. तो ऐश्वर्या के बुक्स में तुम एंट्री कब पास करोगी? तो हाँ, but bank has collected the money, यानी सुष्मिता has honored the bill on the legal due date. So सुष्मिता के बुक्स में एंट्री 4th of Feb को ही होगी. और जो नरेशन आप लिखोगे, जैसे हमने यहां पे स्पेसिफाई किया था कि बिल ऑनर हुआ है लीगल ड्यू डेट को ही, लेकिन समझ में आया? पक्का? आ जाओ, ये कंप्लीट करो पहले एंड देन होमवर्क. I am only keeping these 2 entries on the display because पहला तो एंट्री आता ही है. Something that you already know, but something that you must know. Go to page number 18, 1-8. Because there's a lot of theory involved which can come as MCQ questions, 4 marks to 5 marks. We cannot ignore this. So what we will do is, after doing 2 or 3 problems every day, we will discuss these points also simultaneously. Important terms of bill of exchange. Term or tenure of a bill. The term of a bill is period of time after which the bill becomes payable. So basically 1 month after date, 2 months, that time period. Draft. A bill before acceptance is known as draft. That's why I always told you. We say that the bill is drawn by the drawer, but that time it is purely a draft. It is not a valid legal document. Days of grace. 3 extra days allowed by law over and above the term of bill to the drawee in order to make arrangement for payment of the amount of the bill is known as days of grace. However, days of grace is not allowed for bills payable on demand or sight. मतलब ऐसे भी टाइप के बिल होती है जहां पे टर्म्स ही होते कि मैं जब पैसा मांगूंगा तुमको पे करना पड़ेगा. सो नेचुरली उसमें 3 दिन ग्रेस तो आएंगे ही नहीं. Date of maturity or due date of the bill. The date on which bill falls due for payment is known as date of maturity. If the due date falls on a public holiday, the payment of the bill is to be made on the preceding working day. For example, if the due date is on 26th or 15th of August,
which is a public holiday, then payment of the same will be made on 25th or 14th. I have already discussed this with you. However, if the due date for some reason has been declared as emergency holiday, then the payment must be made on the immediate or next working day. Types of due date: nominal due date, date which is calculated without adding days of grace to the period of bill is known as nominal due date. Legal due date is arrived after adding 3 days of grace to the nominal due date. बराबर है? नॉर्मल बिल पीरियड ऐड किया तो आपको ड्यू डेट मिलेगी, उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस आप ऐड करेंगे तो आपको लीगल ड्यू डेट मिलेगी. इन केस ऑफ बिल्स पेबल आफ्टर डेट, tenure of the bill is given in months, that is payable after 2 months after date, then the due date will be calculated as follows. Any problem? 2 months add कर दिए months में, so 12th of August हो गया. Then we have added 3 days of grace, तो हो गया 15th of August. What is 15th August? Is a recognized public holiday. चकाचक, चकाचक, बोलो जल्दी. 15th August is public holiday, therefore 14th August will become now your legal due date. Tenure of the bill is given in days, so number of days दिए होंगे तो हम number of days में ही calculate करेंगे, correct? Okay, so 90 days लिखा है, 14th December 2019 plus 90 days, so तुम्हारे 17 दिन बचे किसके? अगस्त के, सॉरी दिसंबर के. देन जैन पूरा 31 डेज जाएगा. देन फेब 2020 इज अ लीप ईयर, सो उसका 29 डेज हो जाएगा एंड 31 डेज, दैट इज हाउ इट इज 90 डेज प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस. करेक्ट? सो लीगल ड्यू डेट विल बी 16th of March. क्लियर? इन केस ऑफ बिल्स पेबल आफ्टर साइट, after sight matlab after drawee accepts the same. So bill dated on 27th is accepted on 31st of December. So date of acceptance is 31st December. So आपको जो भी legal due date calculate करना है वो 31st December से calculate करना पड़ेगा. Otherwise things are same. Holder: any person who is in possession of a bill of exchange is entitled to his own right to receive the amount thereon is called holder. Naturally ना, जिसके पास bills receivable है वही लेके जाएगा on the legal due date to the drawee, and drawee is anyways not concerned with anybody. कौन आता है उससे कोई लेना देने नहीं. Who is the holder? Holder in due course. Holder in due course is person who obtains negotiable instrument for a valuable consideration, good faith and before maturity. ठीक है, that's fine. Now this is very very important again from objective type point of view. Trade bill, यानी जो हमने सीखा, a bill of exchange which is drawn by creditor, बराबर है? A draws a bill on B. A is a creditor, B is the debtor. हम हमेशा at the top लिखते हैं. And with valuable consideration is known as a trade bill. A bill drawn and accepted for genuine trade transactions. Accommodation bill, a bill of exchange which has been drawn for mutual financial accommodation of the parties involved is known as accommodation bill. Such bills are drawn and accepted without valuable consideration. मतलब A wants to help B, A trusts B, B trusts A, so A goes and draws a bill on B which B accepts it. Now A can always go and discount the bill with the bank. क्यों? बैंक को थोड़ी पता चलेगा कि देयर इज नो एक्चुअल ट्रेड बिटवीन ए एंड बी. ये पैसा यूज करेगा 2-3 महीने के लिए. बिफोर द लीगल ड्यू डेट ए विल पे द मनी टू बी एंड बी कैन ऑनर द बिल. दिस इज टू अकोमोडेट ईच अदर, टू हेल्प ईच अदर आउट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? Accommodation bill. So what is the difference between trade bill and accommodation bill? In trade bill there is valuable consideration in real life. In accommodation bill, there is no valuable consideration. That only drawer and drawee will know. The rest of the world will never come to know. A will write same thing. 2 months after date, pay me out of my order a sum of rupees 5,000 only for the value received. A sign करेगा.
बी एक्सेप्ट करेगा. हाउ बैंक विल कम टू नो दैट एक्चुअली देयर इज नो वैल्यू रिसीव्ड बाय बी फ्रॉम ए? जब ए ने भी साइन किया, बी ने भी साइन किया. Inland bill. A bill of exchange is drawn between the parties which are located or reside in the same country. Underline. Acha, they reside also in the same country. So obviously payable also will be in the same country and made payable in the same country. Understood? Acha. A bill which is drawn by one country and is made payable in another country. Drawn in one country and made payable in another country is known as foreign bill. For example, a bill drawn in India is made payable in Australia. Drawn in India, payable in, and vice versa. Vice versa मतलब ऑस्ट्रेलिया में और पेएबल इन इंडिया. क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. What you must do is at home. Now you must go to page 19 and page 20 remaining theory. Then I will discuss next lecture. आज का तुम्हारा होमवर्क क्या होगा वो समझ लो. We've completed classwork का 1, 2, 3, 4 and 5. Go to question number 6. In question number 6, there are two parts. A part, all the above 4 bills are honored. That is the part that you will complete on your own. Of classwork as well as homework. I am discussing classwork. Satish draws on Shah following 4 bills on 1/6/2007. By reading this line, I will never pass the entry because Satish जब draw करता है तो वो actually bill नहीं होता है, वो just a draft होता है जिसकी value नहीं होती है. लेकिन next line क्या लिखा? Shah returned to Satish all the 4 bills duly accepted. Underline duly accepted, but also underline 5/6/2007. So first question, tel lagane ke on which date the bills were drawn by Satish? They all are accepted on which date? 5/6/2007. If the bills are accepted on 5/6/2007 in the books of Satish as well as in the books of Shah, you're going to pass 4 entries. Those 4 entries in the books of Satish as well as 4 entries in the books of Shah, you will record on which date? 1/6 or 5/6? See, you are not concentrating today. 1/6 को वो क्या था? तो ड्राफ्ट का एंट्री होता है. It was accepted on, so it became a valid bill of exchange on. So you will pass the entry on which date? ये इसके ऊपर हमारा डिस्कशन हो चुका है. Date of acceptance is the day on which the draft converts into a valid bill of exchange. ड्रॉर के बुक्स में एज वेल एज ड्रॉई के बुक्स में आप किसका एंट्री पास करते हो? बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड का, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड का. तो मुझे सिंपल कॉमन सेंस बोल के परमानेंटली बोल दो, आई हैव ड्रॉन बिल ऑन यू ऑन 1/6 बट यू हैव एक्सेप्टेड ऑन 5/6. सो व्हेन आई ड्रॉ अ बिल, it is not a draft on 1/6. It became a valid bill of exchange on which date? So you're passing the entry for draft or you're passing the entry for bill of exchange? It became a bill of exchange. Draft became a bill of exchange on. So in that case, I will pass the entry in the books of drawer as well as drawee in the books of drawer as well as drawee on. Is that point very clear? Okay. अब ये जो बिल्स थे वो सब में क्या लिखा है? 1 month after date, 2 months, 3 months, 4 months. So now you apply your common sense and tell me, ये आफ्टर डेट यानी कौन से डेट से हम कैलकुलेट करेंगे? प्लीज लुक इनटू द प्रॉब्लम एंड टेल मी. Which date? There are 2 dates, एक है 1/6 और एक है 5/6.
ड्राफ्ट ऐसा नहीं बोलना, ऑन विच डेट, डेट ऑफ ड्रॉइंग. आफ्टर डेट यानी आफ्टर विच डेट, डेट ऑफ ड्रॉइंग. आफ्टर साइट यानी विच डेट, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. इतना ही याद रखने का है. आफ्टर डेट यानी आफ्टर डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल. जब आफ्टर एकदम टेक्निकली बोलना है तो आफ्टर डेट यानी आफ्टर डेट ऑफ ड्रॉइंग द ड्राफ्ट. एंड आफ्टर साइट यानी डेट ऑफ पक्का. हाँ, सो ये सबका जब ड्यू डेट कैलकुलेट करोगे आप तो 1/6 इज 1 मंथ, तो दैट विल बिकम 1/7. सो इसका ड्यू डेट क्या होगा? 4/7/2007 लीगल ड्यू डेट. लिख के रखना. रुपीज पेएबल 2 months आफ्टर डेट. 1/6 plus 2 months is 1/8 plus 3 days of grace. So it is 4/8/2007. Payables 3 months after date. So 6 plus 3, 9 plus 3 days of grace. That is 4/9/2007. 1/6 plus 4 months. 1/10 plus. मुझे जरा भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए. आप जो ड्रॉर और ड्रॉई के बुक्स में एंट्रीज कभी भी नहीं पास करोगे 1/6/2007 को. एंट्रीज कभी पास करोगे? क्यों? ऑन ऐसा 5th of 6th month बोलो, खुद ही कंफ्यूज हो गए. 5th जून. 5th of 6th मतलब मारा मारी. But the bills were drawn on which date? 1st of June. So 1st June को मैंने लिखा पे मी 1 month after date. 1st June को मैंने लिखा पे मी 2 months after date. 1st June को मैंने लिखा पे मी 3 months after date. 1st June को मैंने लिखा पे मी 4 months after date. That's why that after date is date of drawing. Perfect. ठीक है. Satish discounted अच्छा, what 4 entries will per record in the books of Satish? Bills receivable account debit 3,000, to Shah's account 3,000 on 5/6/2007. Then bills receivable account debit 4,000, to Shah's account 4,000. Then bills receivable account debit 5,000, to Shah's account 5,000. Then bills receivable account debit 6,000, to Shah's account 6,000. सब में नरेशन सेम रहेगा, बिल पीरियड अलग है. So we'll write being the bill received accepted by Shah for 1 month. For the balance due from him recorded. Hello. In the books of Shah, you will pass 4 entries. Satish's account debit 3,000, to bills payable account 3,000. Satish's account debit 4,000, to bills payable account 4,000. Satish's account debit 5,000, to bills payable account 5,000. Satish's account debit 6,000, to bills payable account. और सब में नरेशन में क्या लिखोगे? Being the bill drawn by Satish, accepted by us for 1 month, for 2 months, for 3 months, for 4 months, for the balance due to him recorded. चकाचक. अब 4 बिल्स किसके पास है? सतीश के पास. तो किसको ऑप्शंस होंगे? सतीश को. सो सतीश हैज डिस्काउंटेड द फर्स्ट बिल विद बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर 2850. फर्स्ट बिल का अमाउंट जाके देखो. सो इट इज डिस्काउंटेड फॉर 2850. यानी डिस्काउंट चार्जेस कितने हुए? एंट्री बोलो. बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट 2850, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट 150, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3000. यानी पहला वाला बिल का लीगल ड्यू डेट को बैंक ऑफ बड़ौदा जाएगी किसके पास? एंड बैंक ऑफ बड़ौदा विल कलेक्ट द मनी फ्रॉम, एंड वी आर डिस्कसिंग दैट ही हैज ऑनर्ड द बिल. यानी पहला बिल का ऑनरिंग का एंट्री सतीश पास करेगा क्या? सो यहां पे मैं तुमको दिखा रहा हूं. लुक हियर. सतीश शाह. फर्स्ट बिल का डेट ऑफ लीगल ड्यू डेट को सतीश विल नॉट पास एंट्री. शाह विल ऑब्वियसली पास एंट्री बिकॉज ही इज मेकिंग द पेमेंट. ठीक है. सो 4/7 को क्या एंट्री शाह पास करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 3000, टू कैश एंड बैंक अकाउंट 3000, बीइंग द बिल ड्रॉन बाय सतीश, एक्सेप्टेड बाय अस, ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट रिकॉर्डेड. मेरे को कोई लेना देना नहीं है कौन आया क्या नहीं आया. नेक्स्ट. सेकंड बिल वाज एंडोर्स टू राजा, ही इज क्रेडिटेड फॉर 4100. 4100 का बिल था, बट इट इज एंडोर्स फॉर. सो हमारे पास तो बिल 4100 का नहीं है. हमारे पास जो बिल है वो सिर्फ 4000 का है.
So we have received discount of 100. Who told you that we have received discount of 100? It is clearly given, na? It is in full and final. I was liable to pay to Raja how much? But I have given a bills receivable only of, is it part payment or it is full and final settlement? That is why we have received discount of 100 entry. So now this second bill also will be with whom? Raja on the legal due date. Raja will go and collect the money from Shah. Shah has paid. So I will not pass any entry. So again in the books of Satish for second bill on the legal due date, no entry. Shah will pass his standard entry. Kya? Bills payable account debit. 4,000 to cash and bank account 4,000. Third bill. On which date? Yes, 5th of July. So क्या एंट्री पास करेंगे हम? बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 5,000. अमाउंट बोलो, अमाउंट 22 नहीं बोलना. Bills for collection account debit 5,000 to bills receivable account 5,000. Being the bill received, accepted by Shah, sent to the bank for collection recorded. And the fourth bill was retained by himself. So for retaining, we don't pass any entry. वो already receive किया है वही है. अब मुझे बताओ जो थर्ड बिल है उसका सतीश एंट्री पास करेगा कि नहीं ऑन द लीगल ड्यू डेट? यस, बिकॉज he will get the money in his account on the legal due date. What is the legal due date? 4/9/2007. So what entry will pass? Bank account debit 5,000 to bills for collection account 5,000. And जो फोर्थ बिल है वो उसके पास था 6,000 का, उसका क्या एंट्री पास करेगा? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 to bills receivable account 6,000. Understood? So now think and tell me, in all in the books of Satish, how many entries you will be passing? Think. Today you're not thinking at all. You're not thinking. 4 entries for receiving 4 bills receivable. Then first bill is discounted, 5th entry. Second bill is endorsed, 6th entry. 7th entry is when the bill is sent to the bank for collection. That is 7th entry. Right? Then 8th entry is for third bill honored. And 9th entry will be for fourth bill honored. इधर से 4-5 क्या बोल रही हो तुम? 4 एंट्रीज तो आएगा 4 बिल्स रिसीव करने का. उसमें से 3 बिल्स तो चला गया बाहर, तो उसका 3 एंट्री आएगा. Then 1 entry for honoring the third bill and 4th entry for honoring the 4th bill. So how many entries you are passing? In the books of whom? Satish. And in the books of Shah, only 8 entries. Accepting 4 bills, honoring 4 bills. मैंने सबका लीगल ड्यू डेट सब कुछ समझा दिया. इसमें पॉइंट टू बी हैमर्ड इन योर माइंड इज व्हाट? द बिल वाज ड्रॉन ऑन 1/6, इट वाज एक्सेप्टेड ऑन 5/6, so it became a valid bill of exchange on 5/6. So entries in the books of drawer as well as drawee will be recorded on 5/6, but you will not calculate the legal due date from 5/6, but you will calculate the legal due date from 1/6 because date of drawing the bill is 1/6. Understood? इसका ए पार्ट तुम कंप्लीट करोगे होमवर्क का भी. So question number 6, part A, part B, दोनों homework. And you will come tomorrow. You guys will come tomorrow at what? 8 o'clock. I'll see you tomorrow.